Hi everyone, welcome to VRC with Gaurav. In this video, we are going to solve a practice RC passage and the genre is social sciences. Okay, a couple of RC passages from the same genre have already been uploaded. So for people who have solved those passages, for you guys, you could consider this as a third RC passage practice. Okay, so chalo, without any further delay, let's dive in, see what the passage is like. As usual, I would recommend that you pause the video here, read the passage, try to understand, use the timestamps in the description box or the comment section to go to the respective questions, jot down the answers, then come back to this point to check what the explanation is like, to check whether your comprehension is in line with what the author wants to say or not. Okay, chalo. So let's get started. But before that, please do not forget to like and subscribe. Please share it with your friends. और डरो मत शेयर करने से अपने फ्रेंड्स के साथ में थिंकिंग दैट इट माइट रेज योर कंपटीशन. ऐसा कुछ नहीं होता. थोड़ा शेरों वाला माइंडसेट रखो. बी अ लायन, बी फियरलेस. ऑलराइट, so now let's get started with the passage. So the passage actually starts off, स्ट्रक्चर देख सकते हो आप कि शॉर्ट एंड स्वीट अच्छा खासा है, बट द फर्स्ट हाफ ऑफ द नैरेटिव इज थोड़ा सा वेग, थोड़ा सा लेम भी लगता है. फिर वी आर नॉट एबल टू गेट अ गुड हैंडल ऑन व्हाट द ऑथर वांट्स टू एक्चुअली टॉक अबाउट. In the second half, he comes to his point properly, more explicitly. So he starts off actually the first paragraph. इसमें तीन key terms come our way. First is vitality. Then he has meandered into talking about love, and then at the closing remark he mentions the love for nation is patriotism. Thankfully, later on, he does not change the terms once more. He does not bringing any more mirch masala. He sticks to discussing love and patriotism and all that. तो फर्स्ट पैराग्राफ में देखो, बोलने की बात एकदम शॉर्ट एंड स्वीट है. ऑथर सेज टू की थिंग्स ओवर हियर. लेट्स हाईलाइट दोस. देखो क्या कहता है कि we do not love other people as closely or as much as we love our own people. What do we mean by own people? In the case of children, you will love definitely your own children much more than you will love other people's, right? Also, you will love people from your own country, from your own community far more than completely foreign people. Okay, so एक limitation है the kind of attachment that you feel regarding people, whether they are your own or they are completely foreign to you or they are remote from you. ठीक है, तो एक लिमिटेशन है दैट द लव फॉर. तो आपको जो प्यार है लोगों से, वेदर करीब वाला या दूर वाला, इट इज अंडरस्टूड एज व्हाट द लव दैट यू हैव फॉर योर ओन पीपल इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ व्हाट. आपको खुद के प्रति प्यार है ना, खुद के प्रति एक इंटरप्रिटेशन है, मैं, मेरा, स्वयं. ओके, द हिंदी कंसेप्ट ऑफ स्वयं, दैट इज एक्चुअली the self. You can write it properly here. Okay, so author says that love that you have for people who you consider as your own, whether your own children or your countrymen, उसका root कहीं ना कहीं is there in the perception of you having a good solid strong consideration for yourself. All right, so चलो, तो author कहता है कि specifically अगर हम आते हैं regarding love for your country, love for your nation, so that can be called as patriotism. अच्छा ठीक, चलो, all right. Moving ahead in the second paragraph, what the author is saying is कि यार थोड़ा सा उसको प्रॉब्लम हो रही है. He says that love for, let's say, your partner, life partner, where have we interpreted this? तो ये word use किया है para. Okay, actually this word is not used very widely now. Old English word है थोड़ा सा, but it has a really गुड टच. एंड दिस वर्ड पैरामोर जो है ना, ये कहीं ना कहीं दूसरे लैंग्वेजेस में भी शेयर होता है, मीनिंग ओ माय डियर लव्ड वन, या फिर योर रोमांटिक पार्टनर. ऑलराइट, I can recall this song from the movie Coco. Ay mi amor, ay mi amor. Okay, un poco loco. If you're a famous fan of this movie Coco by it's an animated movie, I think Disney Pixar का ही है. उसमें एक बहुत फेमस सॉन्ग है उन पोको लोको. तो उसके अंदर ये एक लाइन है, आई मी अमोर, आई मी अमोर. तो मी अमोर, तो माई लव्ड वन. तो अमोर यू कैन सी, पैरामोर, ये मैच होते हैं प्रोनाउंसिएशन. तो द मीनिंग इज एक्चुअली वन एंड द सेम. तो कमिंग बैक टू द नैरेटिव, ऑथर हियर इज सेइंग कि देखो यार, द लव दैट यू हैव फॉर योर पार्टनर, फॉर योर चिल्ड्रन, ठीक है जी, मे बी इमीडिएट फैमिली, इवन गॉड, ये अलग रखो आप. और द लव दैट यू हैव फॉर योर कंट्री, लव दैट यू हैव फॉर योर नेशन, ये अलग होना चाहिए.
Okay. And why does he believe that? He says कि देखो, whenever we are loving somebody, so we are going beyond our own self interest, we are going beyond our own selfish perspective. बहुत अच्छा वर्ड उसने यहाँ पर एक यूज किया है. I absolutely loved it. Let's highlight it for our benefit. What he says कि देखो यार, ये जो टर्म है ना लव, we use it so loosely. We use it to describe our attachment to हमारा life partner. We use it to describe our attachment to children, to friends, to God, even our nation. तो ऑदर सिंह यार मुझे एक खिचड़ी पसंद नहीं आता. Okay, so let's dive in and understand what love actually means. So what it actually means is कि when you are loving somebody ना, so what you are doing is as an individual you put aside your own self interest. और किस लिए? दूसरों के लिए. And for that he has used a very beautiful word, very positive word actually, transcends. Okay, please keep in mind this is a very positive word, so generally you should not be using it in a negative context. Okay, transcend करना मतलब beyond जाना, किसी चीज के beyond. ठीक है, तो यहाँ पर what we are going beyond is your own selfish interest. When you are loving somebody, so you look beyond yourself. All right, ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. तो author says कि when you are trying to understand, when you are trying to study love for a person, for other people, तो देखो दो चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ती है. ठीक है, when you are trying to understand the character of such attachment, so what is this such attachment? Love. So when you are trying to understand the love, you should take into account two things. First of all, the act of self transcendence. मतलब भाई ये इंसान खुद के स्वार्थ से बियॉन्ड जाके किसी को प्यार करता है, किसी से अटैचमेंट फील करता है, बहुत अच्छी बात. बट साथ ही साथ you should also take into account the different object of those society attachments. What is the different objects of those attachment? कुछ नहीं, बस ये अलग अलग कि whether your attachment is with a partner or is it a children or is it a god or is it to your friends, कौन है उसको भी हमें देखना चाहिए. So based on that, author says that is why I want love for nation being considered separately from these other kind of love. अब इनके अंदर भी whether we need a distinction or not, that the author has not commented. He has put all his focus, he has put his all his energy into discussing this thing, which he says कि इसके लिए एक बहुत बढ़िया प्यारा सा टर्म है जो हम यूज करेंगे, पेट्रियोटिज्म. अच्छा जी, चलो ठीक है. व्हाट इज सो स्पेसिफिक, व्हाट इज सो डिस्कशन वर्दी अबाउट दिस कॉन्सेप्ट? तो ऑथर सेज देखो यार, आपको आपके देश के प्रति जो प्यार है ये मल्टीपल डिफरेंट रीजंस की वजह से हो सकता है. Okay, let's say you are an Indian and you feel love for your country, India. Your friend might feel love for India for a different reason. A person living in a completely different state from yours, once again different reason हो सकता है. Example, that you might feel loyalty, you might feel attachment to your nation because either because of its laws, या फिर किसी को उसकी प्रथा परंपरा हमारी बहुत ज्यादा पसंद हो, किसी को कानून कायदे बहुत अच्छे लगते हो शायद हमारे देश के, कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, वगैरह वगैरह. या फिर कुछ लोगों को धर्म की वजह से. ओके, दैट कैन ऑल्सो बी एन एंगल for feeling loyalty towards your own nation. Okay, so different aspect, different reasons, but at the end all of that boiling down to what, that because of different reasons you feel love for your nation, which the author is dubbing as patriot. Now in the third paragraph, actually this part and this part is one and the same paragraph. Because of formatting reasons I was forced to split them out. Please consider this too as the third para in our discussion. हो क्या रहा है यहाँ पे? अब ऑथर कहता है आते हैं नेशन के ऊपर. When it comes to the part of discussing कि what exactly is a nation, what makes a nation, तो वहां पर बहुत different ideas, different conflicting opinions हो सकते हैं. So let's jot it down. What defines a nation? A lot of conflicting ideas, lot of diversity, lot of different ideas possible. So what about this now? Lot of different ideas if they are possible. तो क्या करें अब हम इस चीज का? Author says this is where patriotism is a really good, amazing thing. क्योंकि पेट्रियोटिज्म अगर आप फील करते हो अपने नेशन के प्रति, तो व्हाट यू वांट इज ओवरऑल गुड फॉर द कंट्री, ओवरऑल गुड फॉर द कंट्री में. दैट्स इट. अब पकड़ के चल लो दैट देयर आर थ्री डिफरेंट गाइस. ओके, लेट्स से दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री. ओके, so what happens now is let's label these guys very pretty. Let's say this is Amar, this is Akbar, and this is Anthony. Okay, Amitabh Bachchan wants to know my location. चलो,
तो लेट्स से पेट्रियोटिज्म में क्या होता है, दीज गाइज हैव ऑल डिफरेंट आइडियाज ऑफ हाउ दे वांट इंडिया टू डेवलप, लाइक व्हाट शुड बी द आइडिया डेफिनेशन ऑफ इंडिया एज अ सोसाइटी। तो पकड़ के चलो कि तीनों के बहुत डिफरेंट आइडियाज हैं। तो फॉर अ ट्रू पेट्रियट गाय, what does the author says, for a person feeling true patriotism, he will be like, कोई बात नहीं, एट द एंड आप तीनों को क्या चाहिए, देश का भला चाहिए ना, चलो बहुत अच्छी बात है, आई एम विलिंग टू सिट विथ यू ऑल थ्री एंड डिस्कस एंड मूव अहेड। लेट्स से वी आर रूलर्स, वी आर सम काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस, हैव सम पावर इन द हैंड, तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपके डिफरेंट आइडियाज हो सकते हैं, बट बिकॉज आवर एंड गोल इज कॉमन, तो आई विल सिट विथ यू एंड आई विल बी सिविल विथ यू, आई एम विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। बट अगर नेशनलिस्ट हो आप, दिस इज वेयर another term comes away in the last paragraph. What does the author say? That if you are a nationalist person, तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। Let's say that Anthony is a nationalist person. Okay, तो ऑथर क्या कहता है कि नेशनलिज्म इज क्वाइट एक्सक्लूसिव इन नेचर। एंथनी का नहीं मूड रहेगा कॉम्प्रोमाइज करने का। एंथनी विल बी लाइक, देखो मेरे दिमाग में देयर इज अ पर्टिकुलर सेट ऑफ डेफिनेशन, एक्स वाई जेड कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव करता हूँ दैट इंडिया एज अ सोसाइटी शुड बी लाइक दिस, बट अमर एंड अकबर एंड यू मिस्टर एक्स, आपके डिफरेंट आइडियाज है, मैं नहीं सुनने वाला आपकी बात। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन नेशनलिस्ट और या नेशनलिज्म एंड पेट्रियोटिज्म। तो हम एक आसान भाषा में यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं दैट नेशनलिस्ट एटीट्यूड इज बेसिकली थोड़ा एक्सक्लूसिविस्ट इन नेचर, जहाँ पे वो सिर्फ खुद के ही गुणगान गाता है, दूसरों की बात सुनने का उसका मूड नहीं है। बट ऑन दी अदर हैंड वेर यू हैव पेट्रियोटिज्म, तो इट इज क्वाइट मैच्योर, सीम्स क्वाइट लिबरल इन नेचर, एंड इट इज फेयरली इंक्लूसिविस्ट। मतलब ये चार लोगों को साथ में लेकर चलने वाला मानसिकता दिख रही है इसकी। एंड दिस इज स्पेल्ड आउट रियली रियली वेल बाय द ऑथर ओवर हियर कि there is an angle, there is a willingness to settle, there is a willingness to do reasonable compromise. कि patriotism provides the basis for working out the differences involving reasonable compromise between different individual members of the nation. At the end goal क्या है भाई, देश का भला करना है। कंसर्न क्या है कॉमन, देयर इज अ कंसर्न फॉर प्रोमोटिंग वेल बीइंग ऑफ द कंट्री। ठीक है, एंड ऑथर सेज कि पेट्रियोटिज्म इज वेयर यू कैन एक्सपेक्ट टू हैव सिविलिटी एंड दैट इज व्हाट इज गोइंग टू मेक पॉलिटिक्स पॉसिबल। ओके, तो वेलबींग फॉर द नेशन जो हमने प्रीवियस सेंटेंस में हाईलाइट किया है, देश का भला चाहिए, साथ ही साथ देयर शुड बी अ विलिंगनेस टू कॉम्प्रोमाइज, दैट इज सेंट्रल टू द सिविलिटी between the members of a nation, and that is what makes politics possible. So in this last closing remarks, thoda sa I was reminded of this legendary speech by Shri Atal Bihari Vajpayee. As a prime minister, you can also go and Google it. Very famous it is. What he says in that is कि देश का ध्रुवीकरण नहीं होना, सरकारें आएगी जाएगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेगी, लेकिन ये देश रहना चाहिए, ये लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। तो बहुत एक कॉम्प्रोमाइज, बहुत एक ओपन माइंडसेट वाला एटीट्यूड कम्स आउट रियली रियली वेल, सो अप्रिशिएबल। ओके, एवरग्रीन एवरग्रीन एटीट्यूड। तो लास्ट पैराग्राफ पढ़ के दैट दैट केम टू माय माइंड। एनीवे, रैपिंग अप द डिस्कशन ऑफ द पैसेज वेरी क्विकली, व्हाट डज द ऑथर से हियर कि देखो, लव ये टर्म बहुत इजीली हम यूज कर देते हैं। आप फ्रेंड के लिए भी बोलते हो, अपने बच्चे के लिए भी बोलते हो, देश के लिए भी बोल देते हो, यार मुझे ये ठीक नहीं लगता। आई एम गोइंग टू टेक अवे लव फॉर नेशन थोड़ा सा साइड में, एंड आई एम गोइंग टू गिव इट अ प्रॉपर नेम ऑफ पेट्रियोटिज्म। एंड देन ही डिस्कसेस द डिफरेंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। नेशनलिज्म को थोड़ा सा क्रिटिसिज्म, थोड़ा सा आलोचना वाला लैंग्वेज यूज किया ऑथर ने। रिगार्डिंग नेशनलिज्म, ऑथर इज सेइंग कि कॉम्प्रोमाइज वाला माइंडसेट नहीं है, इन लोगों के दिमाग में एक पर्टिकुलर व्यू है, ये वो ही इम्पोज करना चाहते हैं। बट ऑन द अदर हैंड, व्हेन यू हैव पेट्रियोटिज्म, these people have a very strong willingness to compromise, reasonable compromise of course, so that there is a common pursuit of that goal of well-being for the nation, and this well-being plus compromise is equal to making politics possible. Okay, very straightforward, very simple discussion. And to be very honest with you guys, actually for even a regular candidate or a half decent aspirant also, getting 3 on 4 in this passage should be very doable. कहीं पे भी कोई ऐसा प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, हैवी वर्ड्स यूज नहीं किए ऑथर ने कहीं भी, ठीक है, एक्सेप्ट दैट वर्ड ऑफ ट्रांसेंड्स, हार्डली हार्डली एनी डिफिकल्ट वर्ड और फैंसी वोकैब कमिंग है। ओके,
तो चलो without any delay, let's go take a look at what the passage is talking about. Not passage, let's say what the question are talking. ठीक है. चलो पहले ही opening statement. Author is most likely to agree with which of the following statements. Okay, you have to think like the author here. All right, and very easily we can spot the correct answer. It's sitting right in the option A itself. क्या कहता है that one's love for oneself, okay, is a contributing factor. Amazingly good choice of words in the love for one's children and nation. बहुत बढ़िया. फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज मेंशन्ड है. कहा है? लेट्स मूव आ लेसर ओवर देयर. The love that you have for your own people, they're your own being your children or your own countrymen, it is a consequence of what? It is a consequence of continuation of the self. The consideration that you feel for yourself, that is somewhere involved in the attachment you feel to your own people. What is that own being? Biological and cultural component. तो biological में children आ जाते हैं आपके, and cultural में आपका nation आता है. Yes, straight forward author का ही opinion है. Option A, clear cut, he will agree with it. Why not the other options? तो कहीं ना कहीं देख लेते हैं. Love for one's nation depends on the love that one feels for one's children. Horribly wrong. Author is simply saying कि देखो, love for one's children should be considered differently from the love that you feel for your nation. Please इनको mix match मत करो, क्योंकि ये term बहुत ही फिर आप loosely use कर रहे हो. Nowhere is he saying कि देश के प्रति प्यार is dependent on आपके बच्चों के प्रति प्यार. No, no. These two may not be linked to each other at all completely. ठीक है? तो gets kicked out immediately. सी में तो आप शुरुआत नहीं पढ़ सकते हो. डेट पेट्रियोटिज्म लाइक नेशनलिज्म गया. यहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो गया बिकॉज द लास्ट पैराग्राफ इज गिविंग यू द की डिफरेंस बिटवीन पेट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म. They have nowhere, elaborated a common point between these two ideas. तो शुरुआत में this turns out to be very shaky, and आगे तो बहुत ही घटिया बोल देता है that patriotism rejects differing conceptions. No, patriotism is okay with differing ideas regarding a nation. It is willing to accept those and make a compromise. So bye bye option C. Option D, यहाँ पर quantifier का problem हो गया only. But patriotism arises only in a situation where one is able to work towards a common goal. ये थोड़ा गलत लगता है मुझे. अगर ये only हटा दो यहाँ से, तो then the statement is true that patriotism can be said to exist in a situation where you are working towards a common goal of betterment of your own nation. But only is that the only situation जहाँ पे possible है? There might be 2-3 other different ways जहाँ से patriotism आ सकता है बाहर. It's just not given to us in the passage. So unnecessary quantifier used here. I absolutely always emphasize कि please handle such options very carefully. Hence it gets kicked out. ठीक है? So I hope that this question is clear to you. Still, if there is any doubt, please let me know in the comment section. More than glad to help you. Also, please feel free to drop your scores. How did you fare in this? What was your mindset? How much time did it take you? Makes for a very good discussion. Okay, चलो आगे चलते हैं. Second question. According to the author, what contributes to the genesis? Genesis का meaning होता है birth. ठीक है? What accounts, what contributes for the birth of politics? Very easy, straightforward. Politics का mention last sentence में ही है. What is making politics possible? Two things: well-being for nation, concern for well-being of the country, plus compromise, willingness to compromise. ये दो चीजों के वजह से मिलाकर आपको पॉलिटिक्स मिलता है. तो ऑप्शन ए के अंदर में प्रॉब्लम हो गया दैट इट इज टॉकिंग ओनली अबाउट द फर्स्ट हाफ की वेलबींग वाला पार्ट इज देयर, कि आपको खुद के बियॉन्ड बिना स्वार्थ वाला जो कंसर्न है, बिना स्वार्थ वाला जो प्यार है देश के प्रति, वो यस दैट इज देयर, बट द कॉम्प्रोमाइज वाला एंगल कंप्लीटली मिसिंग इन ऑप्शन बी. ठीक है? बी में इट इज कैप्चर्ड प्रॉपरली. पेट्रियोटिज्म, यस करेक्ट. पेट्रियोटिज्म मतलब क्या? लव फॉर योर नेशन, कंसर्न फॉर द वेलबींग, कैप्चर्ड प्रॉपरली. And it involves compromise between members of nation. Yes, compromise wala angle also coming in, hence B becomes the answer. ठीक है? Very straightforward. I hope that this got clear to you. आपका सही भी हो गया. Still, if you are confused between option C and D, तो let me know. Otherwise, they're actually very easy to eliminate. चलो आगे चलते हैं. Let's go to the third question.
Okay, once again, we have to think like the author over here. Which of the following is in line with author's concept of love? Okay, love की बात तो पूरे passage में ही की है, ठीक है? Let's see. We cannot stick to just one paragraph here anymore. Let's take a look at the options. Option A तो यार very laughable. Seems like a Hindi cinema line somewhere. कोई दुखी आत्मा हीरो बोल रहा है ये statement. Term love has lost its true meaning. हटे यार कुछ भी. Option B. Love indicates an element, okay, good, of setting aside or going beyond one's self-interest for the sake of others. बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. Where is it mentioned in the passage? It is mentioned over here. कि जो ये term है, it indicates what? That in each of these instances, what instances you feeling love for so many people, your partner, children, friends, and God. इनके प्रति जो आप ये feel करते हो, that involves what? You transcending your own self-interest, you going beyond your own selfish requirement, selfish thought. Yes, B is correct. It is in line with what the author has mentioned in the second paragraph. ठीक है? Option C, patriotism, not love, is a more appropriate term to define what we feel, what we should be terming attachment to the country. नहीं, गलत बात. कहीं पर भी ऑथर ये नहीं बोल रहा है कि लव वर्ड यूज ही मत करो, सिर्फ पेट्रियोटिज्म बोलो. नो, ही इज रादर गिविंग अस अ वेरी प्रॉपर वेल डिफाइंड टर्म फॉर इट कि लव फॉर नेशन मेरे लिए तो भाई पेट्रियोटिज्म है. एंड व्हाट इज सो गुड, व्हाट इज सो ऑसम अबाउट पेट्रियोटिज्म, इट इज इंक्लूसिव इन नेचर, इट इज नॉट एक्सक्लूसिव इज लाइक नेशनलिज्म. तो ऑप्शन सी इज गोइंग ऑन अ टैंजेंट सेइंग कि नहीं नहीं सिर्फ पेट्रियोटिज्म लव वर्ब बोलना ही नहीं, गलत टर्म, ऐसा नहीं है बिल्कुल. तो दैट इज व्हाई सी आल्सो गेट्स किक्ड आउट. ओके, एंड देन कमिंग टू डी, तकलीफ इसके अंदर होगी नॉट वाला टर्म. ये नॉट नहीं होना चाहिए. लव इज डिफाइंड बाय द आइडिया ऑफ एक्सटेंशन ऑफ वन सेल्फ, करेक्ट. इट इज मेंशनड ओवर हियर इन द फर्स्ट पैराग्राफ where you are going beyond, you are rooted in the definition of self and also going beyond that. And second part is by the property of the element being loved. कहां से उठा सकते हैं हम ये? It is given over here कि act of self transcendence, act of extension of self, good. Secondly, different object of those attachments. यार किससे है वो भी तो देखना पड़ेगा, तब जाके आप समझ सकते हो. You can understand what is love in a particular case. So option D says कि नहीं नहीं किसको प्यार कर रहे हो वो देखो ही मत, ऐसा नहीं चलेगा. This is not what the author says. Author rather says कि ये नॉट को गोली मारो, अब मैं खुश हूँ इस ऑप्शन से. ठीक है, so that is why option D is out. All right. So I hope that you understood what this passage is talking about and also what this question wanted you to do. If any doubts, so please let me know in the comment section. Very glad, very looking forward to helping you out. No problems. With that, let's go and solve the next and last question. Please do not forget to like and subscribe. If you have still not liked the video, please go ahead, share it with your friends. And now come with me, solve question 4. Which of the following, if true, चलो thankfully good, we have to challenge the author. उसको weaken करो. Author जो बात करता है उसको damage करना है. And your answer is very easy. Pardon. Your answer is very easy in this case. Option B. ABC are actually completely tangential to the discussion. कुछ भी क्लैरिटी के साथ हम बोल नहीं सकते कि ऑथर सपोर्ट करेगा या नहीं करेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, बिकॉज दे आर टॉकिंग अबाउट थिंग्स विच आर नॉट डिस्कस्ड इन द पैसेज. एक्चुअली रिमोट कंसेप्ट है, टेंजेंशियल है. ऑन द अदर हैंड ऑप्शन डी इज एक्चुअली स्ट्रेट फॉरवर्ड या आंसर, बिकॉज डी कहता है कि नहीं, नेशनलिज्म ऑकर्स जब लोग अलग अलग आइडियाज वाले रहकर भी दे ऑल आर इंक्लूडिंग ऑल द डिफरिंग कंसेप्शन. बट ऑथर का तो क्या बोलना हुआ कि नेशनलिज्म कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं है. नेशनलिज्म इज ब्लिंकर्ड थॉट प्रोसेस. नहीं, ऐसा ही होता है. एक कानून, एक नियम, बस एक विचारधारा. मैं चार दूसरी बातें नहीं सुनूंगा. बट ऑप्शन डी सेइंग नहीं, ये तो कॉम्प्रोमाइज करता है, टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट विचारधारा ऑल्सो. So that is why challenging author's opinion and hence the answer. All right. With that, we have wrapped up the passage as well as the discussion. If any doubts, please let me know in the comment section. Please mention your scores. Please mention how much time did it take you. It helps me understand how you are doing as an aspirant. Thanks a lot for watching. I hope that your prep is going really strong by the time I'm uploading this video. It's a peak prep time. I'm handling a lot of calls actually every day from a lot of my students. Okay? So if you want to get in touch with me, please reach out to me on this mail ID that I've written over here and I'll reply to you promptly. Chalo then. With that, good night.
Sorry, it's night actually when I'm recording. You might be watching it in the daytime. Anyway, tata, bye bye, take care, and I'll see you in the next one.